Hello, everyone. A very warm welcome to this expert speaker program powered by For Life India. And we are thrilled to have you join us for this very special session, which is titled Inside the Mind Science Backed Solutions for Mental Clarity, Mood, as well as Brain Health. And it's my absolute honor to introduce someone who is truly inspiring. We have with us Dr. Sween Saini. She is a clinical psychologist, parenting coach, counseling expert, and career strategist who has been making a difference over 3 decades by helping people around the world lead more empowered and meaningful lives. Dr. Saini is the owner and founder of Mind Mentors, where she shares the wisdom and compassion to help transform not just minds, but also lives of people who get connected to her. We are really happy. We are really inspired and excited to have this session with you, ma'am. Welcome to the session today. Thank you so much. Thank you, Shweta ji and Core Life India, because it is always my pride and privilege to collab on such platforms, which are genuinely working for mental health, physical health, overall well-being of mankind. So, because this is a very stressful scenarios we are experiencing these days, and such initiatives, they are worth applaud. Wonderful job. Thank you so much. Super, ma'am. So, ma'am, without any delay, my first question to you is, what are some common concerns? People today are feeling too much overwhelmed. They are feeling distracted and scattered throughout the day. And what is the reason why people become often easily irritated and lose patience by the end of the day? Yes, rightly said, Shweta ji. जो भी observations आपने बताई हैं, these are so common these days in all ages, and especially more prominent and disturbing in youngsters. Yes. And they are resulting from a combination of different environmental, cognitive, emotional, and physiological factors. The major factor you can say, जैसे आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि we all are living in the era of information overload, which is leading to cognitive burden and decision fatigue. Okay. और ये हमारे ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पे बहुत टैक्स कर रहा है, लीडिंग टू फैटिग एज वेल एज पुअर फोकस. तो जब भी मेंटल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन वीकन हो जाती है, एंड इट मेक्स पीपल मोर प्रोन टू स्नैपिंग और बिकमिंग इम्पेशेंट, सो पीपल गेट इरिटेटेड इजीली. Another very big blunder is doing digital distraction, which is a constant interruption, like phones, apps, alerts. They break concentration and making it hard to complete task, जिसकी वजह से mental fragmentation बहुत ज्यादा बढ़ रही है. Okay. छोटा सा attention shift भी हमारी cognitive performance को low करता है और stress को high करता है. Yes, so exactly. mental energy is used inefficiently, leading to scattered, unproductive feeling and frustration later. Okay. And my question was especially at the end of the day, why do we really easily get, very irritated, especially with people of my age? I hear a lot of people saying that at the end of the day, when kids come to us and they are asking some questions, we get easily, very much irritated and we lose patience. Uska reason kya hai? That is actually lack of control or lack of prioritization. क्योंकि अनक्लियर प्रायोरिटीज हो जाती हैं और गोल्स क्लियर नहीं है, दे आर फीलिंग रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव, और ये धीरे धीरे अपने आप में ही एंजाइटी को हाइटन करता है एंड लीव्स लिटिल मेंटल स्पेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी और इवन कॉन्शियस रिएक्शंस. तो ये जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस एंड स्ट्रेस सारा दिन हम लोग अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये मेंटल ओवरलोड, ब्रेन फॉग क्रिएट करता है. कांस्टेंट डिजिटल इनपुट जो है वो फोकस को स्कैटर कर रहा है, इमोशनल बिल्डअप इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स को जनरेट कर रहा है, फिजिकल फटीग जो हमारी एक जगह पे बैठ के सारा दिन वही स्क्रीन वही काम, जिससे हमारी इम्पेशंस बढ़ रही है, लो रेजिलियंस हो रही है, सहने की शक्ति बिल्कुल नहीं रही. और बहुत सारे प्रोफाइल्स जैसे आपने बोला हमारे एज के या हमारे आसपास के लोग, दे आर हैविंग लैक ऑफ ब्रेक्स, जिसकी वजह से बड़ी बर्नआउट फीलिंग आ रही है. Okay. And they are not able to establish and maintain healthy boundaries, जिसकी वजह से sense of closure नहीं है, rest नहीं है, and they are snapping out all of the sudden in each and every scenario. Okay. Yes, I think that's a very relevant answer.
So, ma'am, how to change? I have also heard that there are changes in the brain cells and structure and function impact the overall mental well-being. So, what's your say on that? या जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम सब देख रहे हैं कि पुराने टाइम का वो तो रहा नहीं सिस्टम, ना स्कूल्स में, ना घरों में, ना वर्क प्लेसेस में, ना सोसाइटी में. सो ये सारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, हमारा जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, टास्क हैं, हमारा लिविंग स्टाइल है, इट क्रिएट्स चेंजेस इन ब्रेन सेल, जिसे हम न्यूरॉन कह सकते हैं, न्यूरॉन स्ट्रक्चर. और उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक डायरेक्ट और पावरफुल रोल प्ले करती है इन शेपिंग मेंटल वेलबींग. Okay. The brain's capacity to form and recognize synaptic connections, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में या मेडिकल फील्ड में. Okay. जब हम इमोशनली स्टेबल हैं, गुड मेंटल हेल्थ में हैं, तब वो पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिकली ड्यू टू एनवायरमेंटल सिनेरियोज. अच्छा. लेकिन नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होती है जब भी हम लोग इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, डिस्ट्रेस में हैं, डिसफंक्शनैलिटी है, तो ये रीइंफोर्स करती है अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी. ओके. तो न्यूरॉन्स फिर वो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे आपने सीरोटोनिन, डोपामिन का नाम सुना होगा, गाबा का नाम सुना होगा, ग्लूटामेट है. तो जब भी चीजें गलत होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वी आर नॉट हैप्पी विद जॉब, वी आर नॉट हैप्पी विद रिलेशनशिप, वी आर नॉट गेटिंग व्हाटएवर वी आर वांटिंग टू अचीव इन लाइफ, तो वो हमारे सीरोटोनिन को लो करता है, डोपामिन के बैलेंस को बिल्कुल खराब कर देता है, और ग्लूटामेट ओवरलोड हो जाता है. Okay. Which leads to various mental health challenges, disorders, and other stress behavioral conditions. Okay, so I think it's a very big problem, and what can be the solution for this? Like, what roles do neurotransmitters and glial cells play in mood regulation and overall brain health? What do you think about it? Like, what's the exact connection? Yeah, actually एक बहुत ही important concept हमारे brain का होता है neurogenesis, which is giving opportunity for birth of new brain cells. और chronic stress, trauma, poor sleep, anger, inflammation, ये सारे उसकी जो nurturing या new generation है उसको block करती हैं. तो chronic inflammation होने लगती है, which can damage neurons and glial cells. Okay. और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट इज सो इम्पोर्टेंट श्वेता जी, बिकॉज इफ आई पुट इन सिंपल वर्ड्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड ग्लाइल सेल्स आर द अनसंग हीरोज ऑफ ब्रेन हेल्थ एंड मूड रेगुलेशन. तो जैसे न्यूरॉन्स हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, इट इज द बैलेंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, जितने भी हमारे ब्रेन केमिकल्स या जिसको आप हार्मोन्स बोलते हो, और ग्लाइल सेल्स जो हैं वो ब्रेन का सपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रूली शेप करते हैं हाउ वी फील, थिंक एंड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल सीरोटोनिन, डोपामिन, न्यूरोफ्रीन, गाबा, एंड अगर हम उसका नाम लें एसिटिलकोलिन. तो जब ये बैलेंस में है तो स्मूथ कम्युनिकेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी है, लेकिन जब ये बैलेंस में नहीं है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, और ये मिलके मूड रेगुलेशन के लिए काम करते हैं. सो दोनों का एक तरह सोचना बहुत जरूरी है. For example, you just think of it like a well-run city. Okay. Neurotransmitter जो messages हैं flying across the city's communication network. लेकिन glial cells जो हैं, they are maintenance crew, sanitation workers, power suppliers, and protective police. Okay, so it's like a protection. Okay. Exactly. तो अगर glial cells जो हैं, they fail to clear old neurotransmitter, the system clogs. जैसे हमारा सीवरेज क्लॉग हो गया, और न्यूरो इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ओवर एक्टिव माइक्रोग्लिया डिसरप्ट्स न्यूरॉन फंक्शन, जिसकी वजह से हमें पुअर एस्ट्रोसाइट सपोर्ट मिलती है, जो सीरोटोनिन और डोपामिन मतलब हेल्दी, पॉजिटिव, हैप्पी हार्मोन्स को रिड्यूस करती है, और रिजल्ट्स मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड अदर कॉग्निटिव इश्यूज. तो ग्लियल सेल्स दे आर ब्रेन्स केयर टेकर्स. अच्छा, केयर टेकर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करते हैं. ओके, एग्जैक्टली. सो वेल फंक्शनिंग अगर ग्लियल सेल्स होंगे तो क्लीन, नरिश्ड, बैलेंस्ड ब्रेन रहेगा. डिसरेगुलेटेड रहेंगे तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन, मूड इश्यूज और ब्रेन फॉग आएगा. ओके. तो मैम, जैसे कि आपने ग्लियल सेल्स के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगी आपको. हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट है फोर लाइफ इंडिया में, विच इज कॉल्ड एज द फोर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर ReCall, and that product is targeted for the brain health.
और एक Yeah. स्टडी किया गया था इस प्रोडक्ट पे एंड इट वाज टेस्टेड हाउ दिस प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द माइक्रोग्लियल सेल्स इन लैब आर यूजिंग अ Yes. मॉडल ऑफ द एजिंग ब्रेन. तो उसका जो Exactly. फाइंडिंग था उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि रिकॉल जो है इट एक्टिवेट्स द माइक्रोग्लियल सेल्स बाय हेल्पिंग रिमूव द हेल्थ थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली. Hmm. Okay, Hmm. so it was seen both in normal aging brain, which is without the stress, and stressed brain, जिसमें inflammation है किसी तरह का. So इसमें ये देखा गया था कि नाइट्रिक मतलब जो ऑक्साइड का प्रोडक्शन है उसका भी इंक्रीज हुआ और साथ ही Yeah. साथ ये जो सेल्स का जो इम्पैक्ट है वो बेहतर हुआ मतलब दोनों तरह के ब्रेन टाइप्स में. सो दिस वाज अ मेजर बिल्कुल. फाइंडिंग लाइक मतलब बेसिकली ये जो जैसे आपने कहा ये जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स होते हैं ब्रेन के and their main job is to protect the brain by any kind of threat by cleaning up the threats. If any kind of threats are there it will clean up and it will maintain a healthy brain environment. जैसा कि आपने कहा एक प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करते हैं. So this was a Exactly. very good breakthrough study which was done by For Life, and it was seen that the recall study which was done on this product, and it was proved that recall activates these microglial cells. So Yeah, they nourish neurons removing and any glial kind of health. I stress. have read it. Yes. Mm. Yes. So I think that was so because you mentioned about this, so I was just very excited to tell our viewers about this study also. So I think Yes. that's very important that we protect our microglial cells, right? Because they regulate the mood also and the overall brain health, right? Yes. And it rewires neurotransmitter pathways. जो भी आप बता रहे हैं वो स्टडी बिल्कुल वैलिड है बिकॉज साइकोलॉजिकली एंड साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं इस तरह के एलिमेंट्स और वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे को रिवायर करते हैं. Okay. Yes. Okay, so I'll also discuss about the product ingredients. I think you're going to really find it interesting. Now let's back come to the topic, and I would like you to explain about neuroplasticity and what is its importance in the mental health recovery. Because बहुत ही actually it's a good news because we are always talking about bad mental health, bad physical health, and the deterioration of the overall all well-being or lifestyle. So being human, we have psychological inflexibility. We are Okay. very flexible. So whatever mental state may be, it may be so bad, traumatic, or anxious. Neuroplasticity is the brain's remarkable ability adapt to new experience, learn new information, and even recover from injuries or psychological trauma. So strengthening or weakening of synapses, जिसे हम connection between neurons बोलते हैं, that is synapses. तो इनको strengthening or weakening करनी हो, changing in the actual structure of the brain, such as growth of new neurons, जिसे हमने neurogenesis अभी बात की थी, or recognition of brain network. Neuroplasticity allows the brain to rewire these patterns through therapy, through mindfulness, and positive experiences to break rigid and maladaptive neural patterns. और इसके लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स तो होती ही हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ने ये भी बताया है कि actual brain changes following some interventions and even some outside supplements, sometimes outside some kind of medication, they can also help neuroplasticity effect to enable new habits and coping mechanism. ठीक है. So brain injury जब होती है तब भी neuroplasticity बहुत support करता है in compensation and retaining of undamaged areas to take over lost functions. Okay. So does it also include the diet and lifestyle in neuroplasticity? Like, is it a combination of diet and lifestyle and therapy? Yes, exactly. This is completely a wonderful combination of they go hand in hand. According to the severity and longevity of the symptoms, whatever the difficulty the person is suffering with, it depends कि उसको recovery में सिर्फ therapeutic techniques लगेंगी या so many times we have to advise supplements also. Okay. But diet और physical activity का भी इसमें role होता है to get a holistic approach? Yes, exactly. आपको पता है जो हमारा gut, brain और immune axis है, ये triad है, which plays a crucial role in regulating both mental and physical health. Okay. So can you explain about what is the relationship between the gut immunity and the brain, and why is the relationship important for both mental and physical health?
You know, that was very interesting study when I went through this, when I was doing my internship in psychology, because I was completely unaware of this. We have never been taught and trained in this diet, exercise, whatever it is, mental health, physical health. It was nothing told to us that related to gut. Gut and brain, they communicate constantly through Okay. vagus nerve. एक हाईवे है एक तरह से कनेक्टिंग द ब्रेन टू द गट, जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं. Okay. और न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सीरोटोनिन जैसे है, 90% न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सीरोटोनिन दे मेड इन द गट. डोपामीन, गाबा, जितने भी हम अच्छे वाले केमिकल्स की बात करते हैं. और एक होता है माइक्रोबायोटा, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन द गट व्हिच आर इन्फ्लुएंस मूड, कॉग्निशन एंड इन्फ्लेमेशन. कि जब अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है, इम्बैलेंस्ड है, it can trigger anxiety or other mental health issues, or it can create a brain fog कि आपका rational, logical, analytical mind काम ही नहीं करता. You might be super intelligent, you might be very much aware कि मुझे अभी professional space में इस तरह से react नहीं करना, but जैसे ही trigger आता है, because there is a brain fog which has covered all your intelligent area, you just snap out. So gut lining is the body's largest immune organ. और जब ये गट इंटेग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे हम लीकी गट बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में उसको, इट कैन एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम रिलीजिंग प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस. These cytokines can cross the blood-brain barrier, leading to neuroinflammation, which is linked to conditions जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि रेस्टलेसनेस है, लैक ऑफ फोकस अटेंशन है, स्नैपिंग आउट है ना, और बहुत सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड और न्यूरो जनरेटिव डिजीजेस का कारण भी यही बन रहा है. और ये तीनों सिस्टम इंटरैक्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट व्हिच इज अ वेरी वेरी कॉमन एलिमेंट इन आवर लाइफ दीस डेज, तो अंग संग सहाई बोलते हैं ना जिसको, वो है आजकल स्ट्रेस. तो स्ट्रेस फ्रॉम द ब्रेन कैन डिसरप्ट गट फंक्शन एंड इट वीकन्स द इम्यून रिस्पांस. एग्जैक्टली. जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं कि बटरफ्लाइज इन स्टमक, जब हम बहुत खुश होते हैं, या व्हेन वी आर इन लव वी से वी हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक. एंड आल्सो इसका अपोजिट होता है कि व्हेन वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, देयर इज परफॉर्मेंस प्रेशर, आवर गट गेट्स अफेक्टेड. A lot of people say that their gut gets affected when they are too much in chronic stress. So I think gut is something which is a powerful thing, and as we say, like 70% of the immune cells lie in the gut. And that is why the gut immunity and brain health are so strongly interconnected, and we need to have a very strong gut, and which leads to good immunity as well as brain health. So I think that's a wonderful way you have explained it. So that means जैसा हम लोग खाते हैं, that also impacts our brain health in a very very clear way you have explained, right? Yes, if you eat diverse fiber rich foods, they will support your microbiome, तो वो support करेंगे brain immune axis को, इंक्लूडिंग fermented, जितने भी fermented foods आजकल काफी सजेस्टिव हैं, योगर्ट, किमची जैसे, तो they also help. Hydration is very important. ठीक है, बाकी जो भी हमारी नेचर वॉक है, अच्छा लाइफस्टाइल है, एनफ स्लीप है, या फिर ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स है, वो भी हमें अवॉइड करना होता है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इंटरकनेक्टेड. और आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं मेरे यहाँ कुछ हो रहा है, बेचैनी घबराहट जब भी होती है तो वो इसी लोकेशन पे होती है, विच इज एक्चुअली द क्रॉस रोड. वो एक चौराहा है जहाँ पे सब चीजें हैपन हो रही हैं, हैपनिंग प्लेस. I think that's a wonderful way you have explained it कि ये किस तरीके से interconnected है, and how from kids to everyone, from the younger to the older adults are getting affected. So I think the gut health is very important, and for this we need to have good diet, good supplements, good amount of physical activity to keep your gut happy, and that's the way you can keep your immunity as well as brain health happy. So that's a wonderful way of presenting it. So, ma'am, let's move on to the last leg of the session, I would say. What are the scientifically researched supplements that you have come across which are most effective for supporting the brain health? Okay. Basically, there are a large variety of this category, लेकिन हम अगर बहुत ही commonly used और बहुत highly effective कुछ limited चीजों की बात करें, so they can support brain cell health like anything. For example, if we talk about omega-3 fatty acid,
So this is found in fish oil. They are essential for cell membrane integrity in neurons. और आपको हैरानी होगी ये जान के कि ओमेगा 3 it improves communication between brain cells and reduces inflammation, जो कि inflammation it is leading to mental health deterioration. तो उसको ये improve करता है. मूड एंड इमोशनल बैलेंस को ठीक करने के लिए वी सजेस्ट मैग्नीशियम विच हेल्प्स रेगुलेट द नर्वस सिस्टम, और ये सिम्टम को रिड्यूस करता है, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, एंगर, एग्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ पैनिक वी कैन से. सो बच्चों में जितनी रेस्टलेसनेस है, यंगस्टर्स में जितनी हम रेज और उसकी फीलिंग है, हाउ टू दे आर इम्पल्सिव, हाइपर रिएक्टिव, उस केस में इमोशनल रेगुलेशन के लिए मैग्नीशियम के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, दे सपोर्ट ग्लूटामेट एंड गाबा बैलेंस, जो कि कामिंग ओवर एक्टिव न्यूरॉन्स को वो काम करते हैं. मेमोरी एंड कॉग्निटिव एनहांसमेंट का बहुत इशू आ रहा है आजकल. बच्चों में मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई है. हम लोग भी बहुत जल्दी वो जो हमारे लेट एज के सीनियर एज के सिम्टम्स थे वो अभी हमारे 40s में आने लगे हैं. कॉग्निटिव एनहांसमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों में कॉग्निटिव डिले आ रहा है. सो उसके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सप्लीमेंट है गिंको बिलोबा, विच इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो टू द ब्रेन. और ब्लड फ्लो अगर ब्रेन को प्रॉपर जा रहा है, अप्रोप्रिएट जा रहा है, हेल्दी जा रहा है, इट विल एनहांस मेमोरी एंड अलर्टनेस. तो बच्चों का जो ये ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है, जितना भी लो अटेंशन स्पैन है, दैट कैन बी very much curated with this. विटामिन बीज भी हम लोग काफी इसमें सजेस्ट करते हैं, which are crucial for neurotransmitter production. और जिनका अगर डेफिशिएंट हो जाए तो they can lead to cognitive decline, fatigue and low mood. So these major 3-4 categories, they can be combined with vitamin D or other supplements, but majorly I have observed the prescription by the psychiatrist even in case of mental health disorders or some kind of physical distress and dysfunctionality. Basically these 3-4 elements, और जिसको हम बोलते हैं हमारे brain supplements, they are used and they are suggestive. Yeah. So ma'am, the wonderful thing is we also have omega fatty acids in our range. So there is a product called as essential fatty acid complex. It's a wonderful combination of plant as well as fish oil. So it's giving you omega 3 as well as omega 6. So it's a wonderful combination for the brain health, of course, and also for your skin, hair, nails, and your cardiovascular health. So it is also increasing the circulation. So when the circulation is good, all the nutrients to the brain are provided in a better way. So another very important, product that we have is transfer factor ReCall. So as I mentioned in between our session also, that this is a scientifically researched supplement. So basically it will support both your brain and immune health. So as you said, like brain and immunity are interconnected. So basically it works by activating the microglial cells. So which is the brain's natural defense system. So what it does is it will clear the harmful threats that are there in the brain and promote mental clarity. So there is a study which shows that ReCall can affect under both normal brain, normal aging, and also when there is any stress related condition, it is going to help with proper wonderful mental clarity. It is going to boost the nitric oxide level for better brain communication and protection. So it's like ideal for student professional, we can say for professionals, for students above 18, and for any senior we can say geriatric population also. It's a wonderful product for older adults as well as old age people. So it will help maintain memory. It will be really good for the focus and resilience as we age. So it is going to work on the cognitive functions also. And the best part is it has ginkgo biloba. As you mentioned, it is wonderful for circulation. Wow. Yes. It has rosemary leaf extract. It has magnesium. It has amino acids. And of course, it has the magic ingredient from 4Life India, or we can say the very powerful ingredient, which is transfer factor trifactor formula. So it is going to enhance your immunity, and it's going to give a wonderful mental clarity and memory, mood. And it has magnesium also. So I think it's a wonderful combination with magnesium, with rosemary. Yes, exactly. So I would like to appreciate this initiative and this product, and I highly advocate, because these supplements, they have no side effect. Yes, exactly.
So as we call them as food supplements, they are extracted from food ingredients. So Yeah. these are really wonderful, I think, for the brain health. So thank you very much, ma'am. Before we end the session, I would just like to have 3 takeaways from you for wonderful brain health. Wonderful brain health. Yes. Okay. First of all, take care of your emotional diet also, as well as along with your physical diet. And lifestyle, it is very important. So I And think yes, these were really good. environment is very important. So keep your environment pollution free, and your mind also pollution free. Superb. I think these are wonderful 3 takeaways from your side. Thank you very much, ma'am. And we are really happy to have you once again on For Life India platform. And we will keep doing such sessions in future also. Thank you Yeah. very much and have a nice Thank you, day. Shweta ji. Thank you, Core India. Thank you so much, everybody, working as a team in this mission. And all my best wishes and all the best. Thank you very much, everyone. So please do like, share, and comment this video. And if you have any suggestions on which video you would like to have or an expert speaker program would you like to have in future, do let us know in the comment box. Thank you very much, everyone. Bye bye, everyone.